You know what? I know a family who's given 10 lakhs of dowry for her daughter's marriage recently. Oh, 10 lakhs? I know a family who's given 50 lakhs and an Audi as well. These are the talks that our women and our people have in the society these days. It is such a disgrace that we don't talk about the same news that we read on the paper where it says thousands of newly wedded women have been murdered or killed for various reasons and mostly dowry. One woman hangs herself from the fan ceiling and the other dies all of a sudden from a stub explosive. Do you think all this is true? Is marriage really worth the lives of these innocent girls? A very good afternoon to one and all present here. I'm Amrita and today I'm here to express my views on the topic dowry or social evil in our society. Our country, India, the land of God, is respectable for its mythological culture, the mythological thinking, the deep beliefs in Almighty and the religious nature that has made India well cultured. But sadly, there are some stained systems in our country which still leaves a black spot on our culture. Dowry system is one of the most discussed, though this is one of the most hated and top facts, most hated. Surprisingly, this is growing day by day. Nowadays, the problem has created a lot of hue and cry in our society. Marriage is supposed to be one of the most sacred and the holy ceremonies in one's life and in one's society. But the fear of dowry has made this one of the most feared institutions. In the ancient Indian society, there was no such thing as dowry. There was no question of being given dowry or taking dowry. It was considered to be a sin. Basically, it all started off as a seed money which was given from the bride side to the groom to start or to establish a new family, and it was solely decided by the bride side itself. But nowadays, the groom's parents demand for more and more for cars, for bungalows, for money for starting their own business, and also gold. Do you think this is fair? Do you think this is fair that they impose so much pressure on the groom, on the bride side? I definitely think this is not. There are so many fathers who kill themselves as they're not able to pay back the debt that they have taken, and this is not done here. On the day of the ceremony, once the dowry is given, it does not end here. The brides are continuously forced to get money from their groom's side, from their parents' side, and once when they fail to do this, they're treated, they're harassed, and they're ill-treated, and this somehow gets them into depression, and they think committing suicide is the best way. They think killing themselves is better than being killed 1,000 times by the husband's side. It's not just killing themselves. These girls are also being killed by the in-laws side. They are being set on fire, and this is called as burning bride. And there are about 2,500 cases that have been registered in our country. And did you know the fact that 80% of the bank loans are taken to meet the dowry demands? Shocking, right? But yes, this is true. And the Amnesty Institute has said that there are about 25,000 women who are being killed every year regarding the dowry cases. And Mahatma Gandhi once said, when he raised his voice against dowry, that a young man who keeps dowry as his condition of marriage not only brings disgrace to his education, society, his culture, but also he dishonors womanhood. Isn't it true? This not only boosts the male ego and male supremacy, it also creates a hatred in the woman's mind that his husband wants dowry from her side, and it somehow does. She won't be able to like his husband, and there will be ups and downs in their married life as well. I'd like to conclude by saying that yes, marriage is a beautiful thing that happens in girls' and guys' lives. It is something that is to be celebrated, but to what level is the celebration to be done? Who's paying for all the wedding expenses? It's the bride's father or the mother, right? It's their parents. It's
is the bride's parent who pays, and he does not have all the money. He has to borrow it from somewhere or some other means, and he is kept in debt throughout his life and ends up killing himself. And I think the solution for this is educating the girl and giving her the choice to make her own life decision and create a career for herself, so that she can be dependent. She can be independent. Thank you, Jenny. तमाम जज हजरात और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की हमारी तकरीर का उन्वान रखा गया है जहेज़ किस तरह गैर कानूनी है और उसको क्यों गैर कानूनी है और उसको किस तरह रोका जाए। जहेज़ आज हमारे समाज में एक बुरी लानत है। दस्तूर हिंद ने इंडियन पैनल कोड की रूह से जहेज़ के लेन देन को गैर कानूनी करार दिया है और हुकूमत ने जहेज़ तलब करने वालों को दफ़ा 198 के जरिए ताज़ीरी मुचला दिया है। कई बार आज हमारे समाज में ये एक बदनुमादाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है कि हर माँ बाप जब अपने बेटे का रिश्ता तय कर रहे हैं तो पहले जहेज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि कितना जहेज़ दिया जाएगा। और लोग तो बड़ी ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि जहेज़ तो हज़रत फातिमा को दिया गया था, जहेज़ देना सुन्नत है और जहेज़ देना चाहिए, लेकिन वो जहेज़ कितना था और क्या था जो हज़रत फातिमा को दिया गया, इस बात पर कोई गौर नहीं करता कि वो किस रकम से दिया गया था। वो दरअसल हज़रत अली के महर की रकम थी जो हज़रत फातिमा को जहेज़ दिया गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था। तो बताइए, आप लोग अगर दीगर सुन्नतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इसका सुन्नत मान भी लेते हैं तो क्यों इस सुन्नत को पूरा कर रहे हैं आप लोग, जो एक लड़की के माँ बाप पर एक जुल्म है। आज लड़की को बार बार मैके रवाना किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम का मुतालबा किया जाए। निकाह इसलिए शादी इसलिए की जाती है कि रूहानी तस्कीन हासिल की जाए, ना कि कोई लड़की के माँ बाप से दौलत हासिल की जाए। ये एक मुहज्जिब भीख है जो लड़के वाले एक लड़की के माँ बाप से मांग रहे हैं। लड़की को बार बार मैके रवाना किया जा रहा है, मैके बिठा दिया जा रहा है कि वो मतलूबा रकम ना ले रही है और वो फलां चीज़ ना ला रही है जिसका मुतालबा ससुराल वाले कर रहे हैं। और जब माँ बाप किसी तरह उस रकम का मुतालबा उस रकम की तकमील कर देते हैं और लड़की को भेज देते हैं, तो कुछ रोज़ तो लोग खामोश रहते हैं ससुराल वाले, और फिर उस पर उस तरह के जुल्म फिर से ढाने शुरू हो जाते हैं। शुमाली हिंद के सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार में ये वबा आम हो चुकी है कि लड़की अगर मतलूबा रकम ना लाती हो तो उसे केरोसिन डालकर जला दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि उस लड़की से जिससे आपको कोई तस्वीर मिल रही हो, आप उसी पर जुल्म सितम करें। ये एक शर्म की बात है उन तमाम लड़कों के लिए जो जहेज़ का मुतालबा कर रहे हैं और अपने माँ बाप को ये बात तक ना समझा रहे हैं कि वो किस तरह उस लड़की पर जुल्म कर रहे हैं जो आपके खानदान की, आपके आने वाली नस्ल की जिम्मेदार है। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप, क्योंकि मेरे यहाँ पर नौजवान साथियाँ मौजूद है, इसीलिए तमाम लड़के और लड़कियों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप जब अपनी शादी की बात तय कर रहे हो तो अपने माँ बाप को ज़रूर बता दें। लड़की ये बताए कि हम जहाँ पर जहेज़ का मुतालबा किया जा रहा हो, आप वहाँ पर मेरी बात ना आगे बढ़ाएं। चाहे रिश्ता होता हो या ना हो, अल्लाह तय करने वाला है। ये ज़रूर है कि हमारा रिश्ता भी तय होगा। और लड़की को भी ये बताना ज़रूरी है कि हम कोई गरीब नहीं है, हम लड़की से शादी अपनी तस्कीन के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने घर की आमदनी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हुकूमत ने, हमारे हिंदुस्तान में हुकूमत में इसे गैर कानूनी करार तो दे दिया है, लेकिन आज तक मुल्क के कोई भी ऐसे इलाके में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया कि फलां शादी में बात तय की गई कि रिश्ता जहेज़ नहीं लिया जाएगा, लेकिन शादी के बाद जहेज़ का मुतालबा किया जा रहा है। आज तक कोई भी एक ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। मैं आपको चंद तजावीज़ बताती हूँ कि किस तरह इसको रोका जाए। तो हमारी जो मजहबी तंजीमें और कौमी तंजीमें कौमी और रियासती सतहों पर चल रही है, उन तंजीमों में आप ये जहेज़ के खिलाफ मुहिम शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ये जहेज़ की लानत ज़रूर ख़त्म होगी हमारे समाज से। जब लड़की और जब रिश्ता तय किया जा रहा है तो लड़की और लड़के के वालिदैन
पुलिस स्टेशन जाए, अपने करीबी पुलिस स्टेशन जाए और इस बात का हलफ उठा ले कि हम इस शादी में ना दहेज ले रहे हैं और ना दे रहे हैं, तभी हमारे समाज की तरक्की हो सकेगी। टीवी और रेडियो पर ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ड्रामे पेश किए जाए जिसमें दहेज की मुखालिफत की गई हो, तब लोगों को पता चलेगा कि किस तरह हमारी लड़कियों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। सिनेमा